Good evening, one and all. Today, I would like to express my sentiments at the death anniversary of Dr. Rafiq Zakaria. It wouldn't be wrong if I say that actions and deeds speak much, much louder than words. And great people who leave their footprints on the sands of time do not leave these footprints because of their words, but they leave these footprints because of their actions, deeds, and their contribution. Dr. Rafiq Zakaria, what should I say about him? I think he was the end of an era in which the expectations from leadership were entirely different from what they are today. A leader was expected to be much, much higher above the common man in his virtues, in his potential, in his special abilities, in his caliber, in his stature. And the leader would uplift society, move society upwards, uplift them in stature, in caliber, in competence towards his noble values. And such leaders were the ones who were respected. About Dr. Rafiq Zakaria, I would say that he had all these attributes that were expected of a leader of those times. He was a PhD from the University of London, the Chancellor of Jamia Urdu Aligarh. He was a scholar of high repute with several books as his contribution. He was an eminent Islamic scholar. And these qualities are not qualities of a common man. They are much higher. All these were there. But about his contribution to Aurangabad, I don't think anyone has made contribution towards Aurangabad to the degree and level which Dr. Rafiq Zakaria has done. As Minister for Urban Development, through the CITCO and through a rapid development of industry, he brought the name of Aurangabad to be recognized as the fastest developing city in Asia. And I don't think this was a small contribution. The pride in the name which Aurangabad had gained was something which we can never forget. It's a different story that later on this speed of growth was curtailed, was stopped. And there are many other factors for it. But one of them is leadership. Because Dr. Rafiq Zakaria was a leader who had a vision, who took things forward. And things were moving forward speedily at that time. The priorities were different. Today they are different. Dr. Rafiq Zakaria's contribution to education must be written in letters of gold. Because today the entire educated class of Aurangabad, doctors, engineers, professionals, other educated people, most of them are alumni of the Maulana Azad College. And I myself take pride in saying that I am a product of Maulana Azad College. One specific incident I remember very fondly. It was a prize distribution ceremony. I was a student going to receive a prize. Dr. Rafiq Zakaria was the one who was giving away the prizes. And when it was my turn to be felicitated, he made a remark which made my heart really sing. He remarked, "A talented daughter of a talented father." These words were so motivating, so encouraging for a student,
that even today I remember these words with a smile on my face. But as I said earlier, this leadership believed in certain ideals and principles. Dr. Rafiq Zakaria believed in the 7 deadly sins as specified by Mahatma Gandhi. If these sins were committed, for example, politics without principles or knowledge without character, if these sins were committed, they would destroy us and they would destroy society as a whole. But as I said earlier, Dr. Rafiq Zakaria was the end of an era. Today we live in an entirely different era. Today, words speak louder than action. Today, the values are different. Courtesy is considered weakness. Honesty is considered foolishness. Ethics is considered outdated. Crime is considered bravery. And justice is considered the realm of the majority. And leaders who possess these qualities are admired today. But as I said earlier, greatness lives forever through one's contributions, deeds and actions. And Dr. Rafiq Zakaria shall live forever through them. Thank you. Well, first of all, I pay my respects to late Dr. Rafiq Zakaria. If there is one real architect of Aurangabad, Dr. Rafiq Zakaria, whatever Aurangabad is today, it is only and only because of his vision, of his foresighted-ness. The development that we have seen of Aurangabad almost 3-4 decades back was only because of the foresightedness that Dr. Rafiq Zakaria saw when he was the minister, when he got elected from Aurangabad. He had the vision to see Aurangabad 50 years down the line. And the new Aurangabad that we see today, the developed new Aurangabad, which comprises mostly the Sidco areas, it was because of the efforts of Dr. Rafiq Zakaria that new Aurangabad, the Sidco area was developed. The 2 5-star hotels, the first 2 5-star hotels that Aurangabad ever saw, that is the Ambassador Hotel and the Rama International Hotel, where because of the efforts put in by late Dr. Rafiq Zakaria, he convinced them that Aurangabad needs to have 5-star hotels also because of its importance as far as tourism destination is concerned. As you all know, Aurangabad happens to be the only city in the world where you have 2 World Heritage monuments at a distance of just about 100 kilometers. That's the world famous Ajanta and Ellora caves. They are both World Heritage monuments. And Dr. Rafiq Zakaria realized that if we want to attract international tourists to Aurangabad, we need to have good hotels, good infrastructure. The water that we get today to drink, the people of Aurangabad are thankful to the efforts put in by Dr. Rafiq Zakaria when he visioned the Jaikwadi Dam, and with other leaders of that time, he made sure that Aurangabad also required water, and that Jaikwadi Dam came into being. There were a number of other projects that Dr. Rafiq Zakaria did for Aurangabad, and in all these years there are thousands and thousands of students who have passed out from his institutions. The Maulana Azad College, Aurangabad had the first exclusive ladies college that Dr. Rafiq Zakaria started. He runs pharmacy colleges, B.Ed colleges, schools. So all these education institutions actually helped a lot of students, especially from the minority community. And from the minority community, especially the Muslim community, took the maximum advantage of this education institution. I would presume the thousands and thousands of people who have passed out from here and they are shining across the world
are the products of this Maulana Azad Education Trust, and I luckily also happen to be, I'm very fortunate to be a student of Maulana Azad College. So very special thanks to late Dr. Rafiq Zakaria, and I thank Mrs. Fatima Zakaria also, who is carrying what was left by late Dr. Rafiq Zakaria, the entire staff of Maulana Azad Education Trust, the society, the management, the non-teaching staff. They are doing excellent work as far as spreading education is concerned, and it is all because of the vision and the foresightedness of Dr. Rafiq Zakaria that what Aurangabad is today. So I would rate him as the real architect of Aurangabad. Dear friends, at the outset, I pay rich tributes to Dr. Rafiq Zakaria, a man of great intellect, statesman and educationist, on his 15th death anniversary today. We, the people of Aurangabad, are fortunate that late Dr. Rafiq Zakaria chose to make Aurangabad as his home and left a rich legacy that we are benefiting from today. Dr. Zakaria was a stalwart who left his mark on politics, education, journalism, literature and research field. He was one of India's leading Muslim leaders and an internationally known scholar on Indian politics and Islam. He was closely associated with India's freedom struggle. May it be Maharashtra, nation or the world, Dr. Zakaria ably handled many important responsibilities during over 50 years in public service. His stint as cabinet minister in Maharashtra was highly successful. He also earned praise for his excellent work in parliament, particularly as deputy leader of Congress in parliament. That he represented India in the United Nations thrice, 1965, 1990 and 1996, speaks about the global acclaim and acceptance he received. He enriched the public life of Aurangabad and Marathwada in many ways. Through Maulana Azad Education Society, he opened the doors of education to masses. From school education to post-graduation courses in different faculties, all educational opportunities have been made available to students of Aurangabad. Because of him, the city boasts of a world-class hotel management institute today. Thanks to the ceaseless work of Dr. Rafiq Zakaria and his better half Fatmaji, Aurangabad is hosting one of the best educational campuses in India. We will also remember Dr. Saab, the late visionary, for the impetus that he gave to the growth of this backward region. 5 decades ago, the growth of historic Aurangabad, once capital of Deccan, had stagnated. At this crucial juncture, Dr. Rafiq Zakaria made forays into the public life of Aurangabad. He played an instrumental role in bringing Chikalthana Industrial Estate to this city. Dr. Zakaria laid the foundation of New Aurangabad. It was under his stewardship that CIDCO came to this city. CIDCO provided affordable housing to the working class, which was attracted those days to the upcoming industrial estates. He is rightly called the architect of modern Aurangabad. It was because of Dr. Zakaria's vision that Aurangabad got an international airport. It was again Dr. Zakaria who persuaded big corporate houses to set up units here. Dr. Saab was a passionate individual, man of words and man of action who never got tired. He dreamed big and did not rest till he turned that dream into reality. Dr. Zakaria had worked with my late father Jawaharlalji and so had a very special place for me in his heart. I was hesitant initially to join politics, but it was Dr. Zakaria who persuaded me.
राजन, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो कैसा चलेगा? He asked me one day. I tried to embrace his brand of secular and development politics. Whatever I could do for Aurangabad during my 3 terms as an MLA and minister, credit goes to his guidance. I used to often seek his advice. He strongly detested the politics of caste and religion. Finally, I congratulate Dr. Makhdoom Farooqi, the principal of Dr. Rafiq Zakaria College for Women, and his team for hosting this excellent national webinar. We will all draw energy and develop vision for future by remembering the deeds of Dr. Zakaria. I thank organizers for giving me an opportunity to express my views on this platform. Jai Hind, Namaskar. मैं मोहम्मद हिशाम उस्मानी, अध्यक्ष औरंगाबाद शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी। आज इस मौके पर ज़करिया साहब को याद करते हुए चंद बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ज़करिया साहब की जो कायम करदा इंस्टीट्यूशंस थे, जिसमें एक स्कूल मॉडल हाई स्कूल, उसका मैं स्टूडेंट रहा। उनके स्कूल में ही 10th तक मेरा एजुकेशन हुआ। उसके बाद आज़ाद कॉलेज जो उन्होंने कायम किया था, उसमें मेरा ग्रेजुएशन हुआ। साथ साथ मैं बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ ज़करिया साहब को देखने का एक मुझे हमेशा मौका मिला, क्योंकि वो मेरे दादा के वक्त से हमारी फैमिली से उनके ताल्लुकात आए थे। मेरे दादा औरंगाबाद के एक मशहूर शायरों में से थे और ज़करिया साहब एजुकेशन और लिटरेचर की बहुत वैल्यू करते थे। दादा एक प्रोफेसर भी थे मल्टीपर्पज़ के अंदर, तो ज़करिया साहब का आना जाना हमारे परिवार के साथ लगा रहा। बाद में मेरी मदर, उन्होंने ज़करिया साहब के ही कॉलेज में एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया और अपनी खिदमत को अंजाम दिया। साथ ही साथ ज़करिया साहब, मेरे वालिद ने एक यहाँ इंस्टीट्यूशन कायम किया था, अंजुमन तरक़्क़े उर्दू, जिसमें कैलीग्राफी और भी सिखाई जाती थी। तो उसमें भी ज़करिया साहब काफ़ी इंटरेस्ट लेके वालिद साहब को उसमें इनकरेज करते। उनके प्रोग्राम्स में आते, नशिस्तें रखी जाती, जिसमें औरंगाबाद के मशहूर व मारूफ और सारी शख्सियतें आती थी। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मैं एक कोने में बैठ के हमेशा ऑब्जर्व करता था कि ज़करिया साहब पर्सनली उन सारी जो मीटिंग्स होती थी या नशिस्तें होती थी, उसके अंदर गाइड भी करते थे और उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर लोगों को मोटिवेट और इनकरेज करते थे। बाद में जब मैं मेरा कॉलेज ख़त्म करके बिज़नेस में आया, तो मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ बिज़नेस के अंदर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से, जो हमारे हिंदू भाई हैं सारे समाज के, उनसे मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ आया। मुझे देखने में ये आया कि मैं कहीं भी जाता तो द मोस्ट रिस्पेक्टेड एक नाम जो निकलता था सारे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े लोगों के मुंह से, वो ज़करिया साहब का निकलता था। डिस्पाइट के समाज में मैं देखता था कि पोलराइजेशन बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड शुरू हो चुकी थी 1990 के बाद से। लेकिन उसके बावजूद ज़करिया साहब का जो एक मुकाम था, जो उनका एक नाम था, जो उनका एक इमेज थी, वो बरकरार रही और वो मुझे बहुत एज ए यूथ इंस्पायर करती थी। बाद में मैंने 2008 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, मैं पॉलिटिक्स में आया। तो मेरा एक वो जो चीज़ थी, जो पास्ट की जो मैंने देखी थी सारी बिजनेस में और मेरे एक्सपीरियंसेस में, तो वो चीज़ मुझ पर कहीं छाप छोड़ गई। मेरा एक ही लक्ष्य था कि ज़करिया साहब ही मेरे पॉलिटिकल आइडियल थे, जिसने इस शहर को, अगर मलिक अंबर के बाद कुछ किसी का हम नाम ले सकते हैं, तो मुझे लगता है वो ज़करिया साहब का नाम आता है। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे घाटी हॉस्पिटल हो, चाहे MIDC हो, चाहे सिडको हो, चाहे हटको हो, चाहे आपका
आज़ाद कॉलेज का इंस्टीट्यूशन हो, ऐसी अनगिनत चीज़ें, और पानी की जो पाइपलाइन का उन्होंने काम किया जिसकी वजह से आज मुझे लगता है कि शायद औरंगाबाद इतना बढ़ पाया। ऐसी अनगिनत चीज़ें ज़करिया साहब ने इस शहर को दी हैं। तो ट्रू सेंस में अगर किसी को एक लीडर या एक स्टेट्समैन कहा जाए तो मुझे लगता है विजनरी उनकी एक बहुत बड़ी छवि। और आज नसीब से मुझे औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई है पार्टी हाईकमांड की तरफ से, सोनिया गांधी जी और बाला साहेब थोराट साहब की तरफ से। तो मेरा एक ही विजन है कि जो ज़करिया साहब ने काम किया था उनके फुटप्रिंट्स पे चलते हुए उस काम को या उस विजन को ही मैं अपना एक मोटो या लक्ष्य मान के मैं इसको लेके चलूं। जो सेक्युलरिज्म उन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग वो हमेशा जिंदगी भर जपते रहे, वो विजन को मैं साथ लेके चलूं। साथ ही साथ मेरे कुछ ख्यालात थे जो मैंने अपनी सीनियर्स के सामने पहले ही रखे थे कि अगर ये अध्यक्ष की पद मुझे मिलती है तो हमारे औरंगाबाद के जो फाउंडर्स थे जिसने कांग्रेस यहाँ पे औरंगाबाद में बढ़ाई और एक तरीके से उसको कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, उसमें एक सबसे बड़ा नाम डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब का उभर के आता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी अध्यक्षता में गांधी भवन जो हमारा मेन ऑफिस है पार्टी का, वहाँ डॉक्टर रफीक ज़करिया की एक अच्छी सी तस्वीर उनकी हम लगा सकें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को, जो कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं जो पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ साथ आते हैं कांग्रेस पार्टी साथ में ज्वाइन करते हैं पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ, उनको रफीक ज़करिया साहब की वो तस्वीर, हमारा जो लक्ष्य है औरंगाबाद के लिए, जो हमारा एम है, वो याद दिलाती रहे। और जो भी काम उन्होंने किए उसको हम आगे बढ़ाते रहें। और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आज इस मौके पर उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब जब पहला इलेक्शन औरंगाबाद से लड़े 1962 में, जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाशवासी बाबूराव जी काळे थे और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना साहेब जेजे थे, उस वक्त जब वो पहली बार इलेक्शन लड़ने आए थे, उस वक्त मैं कांग्रेस सेवा दल में काम करता था और मेरे पिताजी प्रेमचंद जी मुगदिया ये शहर कांग्रेस के कमेटी के सेक्रेटरी थे। उस वक्त उन्होंने एक बलाढ्य शक्ति के साथ उनकी इलेक्शन हुआ। आदरणीय गोविंद भाई शराफ उनके खिलाफ खड़े थे। उस इलेक्शन में एक ये शहर के अंदर सभी समाज को बराबर ले जाने का काम पहले से ही था, आज भी है। लेकिन ज़करिया साहब एक स्वतंत्र सैनिक, विकास के माने हुए गोविंद भाई शराफ साहब का उस इलेक्शन में पराभव किया और जब से उन्होंने इस शहर का विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया है। सबसे बड़ा काम अगर उन्होंने किया होगा, सिडको जो एक योजना थी उनके जमाने में हुई हुई है, 5 स्टार होटल नहीं थी यहाँ, वो भी उनके जमाने में हुई हुई है। और पहली जो जायकवाड़ी की पाइपलाइन हुई वो ज़करिया साहब के मेहनत से उस कांग्रेस सरकार ने दी थी और उसमें उस वजह से ये शहर का बहुत बड़ा विकास हुआ और वो शहर, ये औरंगाबाद शहर का नाम आशिया में सबसे बड़ा विकास शहर बोल के माना है। ज़करिया साहब का दूसरा धोरण था एजुकेशन के तरफ। जो गौर गरीब बच्चे हैं उनको, समाज के बच्चे हैं और अदर समाज के बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए मौलाना आजाद शिक्षण संस्था उन्होंने स्थापित की। 62 का इलेक्शन मैंने देखा, 67 का इलेक्शन देखा, 72 का इलेक्शन देखा। उनके साथ मुझे बहुत नजीक से काम करने की संधि मिली और उस वक्त पहले इलेक्शन में कांग्रेस के लोगों ने
मेरे पिताजी जब शहर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, उनका नाम ही बदल के बोले प्रेमचंद झकेरिया, ऐसा उनका नाम दे दिए। बहुत मेहनत किए उस वक्त, और झकेरिया साहब ने जो शहर का विकास है, मैं तो आज मानता हूं कि जब मैं यूथ कांग्रेस में काम कर रहा था, झकेरिया साहब ने जो जो विकास किए शहर के, अगर सही शिल्पकार होगा इस शहर का विकास का, तो डॉक्टर रफीक झकेरिया साहब ये शहर के विकास के शिल्पकार हैं। उनके विचारों को, उनके विकास के धोरण को, उनके साहित्य के धोरण को आज हमें युवकों को बताना है, क्योंकि आज युवकों को ये मालूम नहीं है, आज के युवकों को, कि डॉक्टर झकेरिया कौन है। लेकिन जो हमको मालूम है, तो वो डॉक्टर झकेरिया साहब के विचार समाज के सामने, वो विचारों को सामान्य लोगों तक हम कांग्रेस के तरफ से लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। नए युवकों को डॉक्टर रफीक झकेरिया साहब के बारे में इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन झकेरिया साहब ने जो विकास किया है इस शहर का, उसके बाद जो भी विकास थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जितना फास्ट विकास डॉक्टर झकेरिया साहब ने अपनी भूमि मान के, औरंगाबाद ये मेरी भूमि है, मेरी कर्म भूमि है, ये मान के उन्होंने एजुकेशन, मेडिकल में, अदर ये पानी की सबसे बड़ी योजना साहब, ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज भी मैं जहां पार्टी के भाषण को, कांग्रेस पक्ष का एक निष्ठावान सैनिक बोल के उन्होंने काम किया है। 62 से 78 तक उन्होंने काम किया है। उस बीच में वो राज्यसभा के भी सदस्य थे, और औरंगाबाद शहर के वासी डॉक्टर रफीक झकेरिया को कभी भी भूल नहीं सकते, ये मेरी धारणा है। और मैं कहीं भी रहो, पार्टी के अंदर रहो या कहीं हो, तो मैं एक कांग्रेस का पदाधिकारी नाते उस जमाने में झकेरिया साहब की कार्यशैली, कार्य और सब समाज को संभालने का और सबको लेके चलने का जो उनका धोरण था, वही धोरण अब हम लोग वापिस वो विकास की चाकोरी या औरंगाबाद शहर में शुरुआत करने वाले, और डॉक्टर साहब के कार्य का सब पूरी मालूमात लोगों तक पहुंचाने वाले यही है। और आज मुझे हर बार कहीं भी खड़ा रहा तो डॉक्टर झकेरिया साहब की बहुत याद आती है, और आज भी आंखों के सामने उनकी काम और उनकी जो शहर के लिए विकास, ये जो एक दृष्टिकोण था, एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत काम किया। नहीं तो आज एक आजाद कॉलेज की संस्था उन्होंने स्थापन किया, और कितनी मेहनत से उन्होंने पाया उस संस्था का लगाया, और यहाँ के समाज के, हर समाज के सब साथियों ने उनको साथ दिया। इसके आगे हमें ये पीढ़ी में आज बहुत दिन के बाद कांग्रेस कमेटी के अंदर एक एजुकेशन में सबसे ज्यादा सीखे हुआ, पढ़े हुआ और सब कुछ समाज को लेके चलने वाला एक युवक, जिसको राजकीय पार्श्वभूमि नहीं थी, और एक अच्छे खानदान का युवक आज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए है। और जो जो इस शहर को विकास करने में जो भी कुछ लोगों ने भाग लिया है, और डॉक्टर झकेरिया साहब एक उस वक्त के जो नेता थे हमारे पास, कैलाशवासी बाबूराव जी काळे होंदो, नाना साहब जेदे होंदो, कैलाशवासी बाला साहब ये पवार साहब होंदो, और उस वक्त मुख्यमंत्री शंकरराव जी चौहान होंदो, उनको साथ ले जाके, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पंतप्रधान उस वक्त के पंतप्रधान इंदिरा जी गांधी के मार्गदर्शन में वो काम करते थे। उस वक्त महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री, लोक नेते यशवंतराव जी चौहान के मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे, और अच्छा एक शहर का, और उनका एक ही दिमाग था कि इस शहर का विकास होना। आज हमें उनकी याद आती है, और वो यादें को देखते हुए हम आगे उनके विचारों को, सब नेताओं के विचार लेके हम पूरे समाज को एकत्र
करके ये शहर का अगला उनके जो कुछ विकास के सपने रह गए हुए हैं जकेरिया साहब के, ये कांग्रेस पक्ष के माध्यम से हम औरंगाबाद शहर में करने का प्रयत्न करता हूं। और जकेरिया साहब ने जो हमें, जब यूथ थे हम लोग, जब हमें जो मार्गदर्शन किया, जो विकास की हमको लेखनी सिखाई, वो देखते हुए हम आगे काम करेंगे, इतना ही मैं बोलता हूं। और ये यादें हमें, जब तक हम जीवित है, जब तक जकेरिया साहब के विकास की यादें हमें बताती रहेंगी मार्ग, इतना ही मैं बोल के मेरे 2 शब्द। डॉक्टर रफीक झकरिया यांच्या या स्मृतिदिनानिमित्त औरंगाबाद येथील डॉक्टर रफीक झकरिया महिला महाविद्यालयाच्या वतीनं होणाऱ्या वेबिनारला मी शुभेच्छा देतो। औरंगाबाद शहर हे नक्कीच आज ज्या पद्धतीनं उभं आहे किंवा जी ओळख औरंगाबादची झाली, औद्योगिक नगरी असेल, शिल्पवाडप असेल, औरंगाबाद विमानतळ असेल, औरंगाबाद जायकवाडी पाणी पुरवठा योजना असेल, या सर्व योजनांचं निश्चित श्रेय हे डॉक्टर रफीक झकरिया यांनाच द्यावं लागेल, अशी औरंगाबाद जनतेची, औरंगाबादमधील प्रत्येकाची ही भावना आहे। आज औरंगाबादसारख्या ठिकाणी कोकणातून येऊन या माणसांनी महिलांच्या, विशेषतः अल्पसंख्याक महिलांच्या शिक्षणासाठी जी इन्स्टिट्यूट उभी केली, त्या इन्स्टिट्यूटचा फायदा अल्पसंख्याक समाजातील मुलींना खूप प्रमाणात झाला आणि निश्चितच त्यांचं जीवनमान उंचावण्यास सुद्धा मदत झाली। औरंगाबाद शहर हे आज शिक्षणाची पंढरी म्हणून पण ओळखलं जातं। तर मौलाना आझाद इन्स्टिट्यूट सारखे इन्स्टिट्यूट या औरंगाबादमध्ये सर्व धर्मीय विद्यार्थ्यांना जे उच्च दर्जाचे शिक्षण देते त्या निमित्ताने ओळखले जाते। Maharashtra state was formed on 1st May 1960. The first Maharashtra state assembly elections were held in 1962. Dr. Rafiq Zakaria contested first time in these elections from Aurangabad city and won. His win was continued for 3 consecutive years till 1977. Once he was elected, the development of Aurangabad city began. Before Dr. Rafiq Zakaria, Aurangabad was an undeveloped historical city guarded by huge walls. During his 15 years tenure, Aurangabad city witnessed educational, industrial, urban and aviation development, the examples of which are Government Engineering College Aurangabad, Government Medical College Aurangabad expansion with huge infrastructure at Ghati area, development of Azad College campus, development of new neighborhood like Sidco and Hadco, establishment of Aurangabad Airport and All India Radio, 700 diameter water pipeline from Jaikwadi to Aurangabad city. Dr. Rafiq Zakaria is one of the few individuals of Indian politics who are remembered and will always be remembered at national and international levels. Hi, I belong to that generation which grew up in Aurangabad during the decades of 1960 and 70. We looked up to many stalwarts for inspiration, but one of the tallest amongst them was Dr. Rafiq Zakaria ji. He was truly the father of the modern, new industrialized city that Aurangabad is. As Urban Development Minister in the first cabinet of Maharashtra state, he laid the foundation for the new Aurangabad and later on gave a fillip to the industrialization which started off with Chikalthana Industrial Estate and then later on spread its wings to all parts of Aurangabad. Dr. Rafiq Zakaria ji was an extremely erudite and cultured person, a rare breed amongst politicians. His contributions as an educationist are also immense. He set up a series of schools and colleges in Aurangabad which have grown in repute and brought laurels in the field of academia. Zakaria ji indeed was a towering personality, and Aurangabad has much to thank for.
I pay my tributes on his 15th death anniversary and hope that coming generations will take inspiration from a person like him and walk in his footsteps. My respects. Hello everybody. I have been requested to talk on my remembrance of late Dr. Rafiq Zakaria on his 15th death anniversary. My name is Anil Kumar and I am the Managing Director of CTR Manufacturing Industries Private Limited, whose factories are located at Aurangabad, Pune and Nasik. While I was at the Harvard Business School in Boston, USA, completing my Masters in Business Administration sometime in the year 1973, my father, late Pratap Kumar, in one of his weekly telephone calls, informed me of a meeting with late Dr. Rafiq Zakaria, who was then the Revenue Minister in the Maharashtra cabinet, when Dr. Zakaria requested my father to consider Aurangabad as the next destination in the expansion plan of CTR. I later learned that my father met late Dr. Rafiq Zakaria frequently and they were good friends. It was therefore but natural that my father acceded to the request of late Dr. Rafiq Zakaria and deputed a senior manager to go to Aurangabad for a reconnaissance visit to understand infrastructure, availability of manpower and the industrial climate in general. The officer returned with positive comments, especially relating to air connectivity, hotel accommodation and availability of land. My father therefore in the next meeting with the late Dr. Rafiq Zakaria informed him that CTR would set up a factory in the Chikkalthana MIDC area and that it would be a manufacturing facility with 100% export of plastic film capacitors used in professional grade end applications such as medical electronics, automation, computers, etc. After traveling from Boston to Switzerland, where we had entered into a technical collaboration, I literally picked up the manufacturing assets of our collaborator and transferred them to plot E1 Chikkalthana, MIDC, where today over 14 different facilities of the company exist. My first interaction with late Dr. Rafiq Zakaria was a memorable one. I had only just returned from Switzerland after training with our collaborator and was eager to convey the technicalities involved in the manufacture of plastic film capacitor, for which I was made responsible to set up the factory. Despite not being an engineer, late Dr. Rafiq Zakaria was clearly seen asking the right questions and paying close attention to details of the project. I remember him clearly mentioning that the factory should provide maximum employment rather than being fully automatic. Subsequent, when I visited Aurangabad, the late Dr. Rafiq Zakaria was kind enough to personally introduce me to his right-hand man at that time, Mr. Zulfikar Hussain, who was then secretary at the Maulana Azad Education Society. Mr. Zulfikar Hussain supported CTR, helping in every way possible and keeping the late Dr. Rafiq Zakaria up to date in the progress of the project. In my second meeting with late
Dr. Rafiq Zakaria, I found him to be warm-hearted, interested in the development of Marathwada, and in particular Aurangabad, for which he became to be known as the architect of New Aurangabad. During several other meetings from time to time, I remember one more specifically, when he offered that I live in the Maulana Azad campus guest house, designed by well-known architect, late Mr. I.M. Khadri. It was in this guest house that I was fortunate to meet various dignitaries, including late Shankar Rao Chavan and his son. By then, the personal residence of the late Dr. Rafiq Zakaria, which was under construction right next door to the guest house of Maulana Azad College at Rosa Bagh, came to be completed. And knowing his fondness for good food, I carried from Hotel Rama International mutton and chicken kebabs when I visited his new house, where we were looked after by a person who had worked for the family for many years, and if I remember correctly, the name was one Mr. Pascal. Thereafter, on every occasion when Dr. Rafiq Zakaria visited Aurangabad, we would spend some time inquiring, feedback from the people at large at the remodeling of Aurangabad, and often asked for my suggestion. I found the late Dr. Rafiq Zakaria to be a man of intense energy, wide knowledge, and a desire to achieve his dreams, which I believe he did by laying the foundation of today's Aurangabad. During such meetings, I would often see poor people speak to him, and on every occasion, he lent them a helping hand. In summary, I would say, truly a man of deep thought and a large heart. Thank you. I had the privilege of seeing and hearing Dr. Rafiq Zakaria Sahab when he graced a couple of functions in our school, that is the Little Flower School in the 60s. I am also very proud that I have passed my Masters in Mass Communication and Journalism from the Maulana Azad Institute in 2012. And I am very happy that during that time I could interact with the dynamic Madam Fatima Zakaria, who is very inspiring. Zakaria Sahab was a very respected and revered citizen of Aurangabad, and he has been instrumental in its development in the 60s and 70s. He was a renowned scholar, writer, educationist, and a visionary. I pay my humble respects to him. 1962 was a turning point in the history of Aurangabad. It was in that year Dr. Rafiq Zakaria decided to contest election for the State Assembly, won the election, and went on to become the cabinet minister. Prior to his arrival in Aurangabad, Dr. Zakaria had already made a name for himself. As a student activist, he actively involved himself in India's freedom struggle. He participated in agitations and was arrested for it. After his post-graduation from Bombay University, he went to London for his PhD degree and got his PhD. He was called to the bar by Lincoln Inn and became a barrister. After his return to India, Dr. Zakaria started his legal practice and became a very successful lawyer.
it was at this stage he attracted the attention of Pandit Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister of India. Nehru was attracted by him as he was a reader of his column in Times of India. He invited Dr. Zakaria to join politics and gave this responsibility to Sri Yashwantrao Chauhan, who then was the Chief Minister of Maharashtra. My first impression of Dr. Rafiq Zakaria goes back to 1965. The occasion was his visit to Government College, where I was a student. I was tremendously impressed by his charismatic personality, a highly refined and cultured gentleman. When I joined Maulana Azad College as a lecturer, I got opportunities to see him more often. But my association with him was distant. It was only in 1990 when I was appointed the principal of a newly started women's college at Naukhanda, now known as Dr. Rafiq Zakaria College for Women. Dr. Rafiq Zakaria was a scholar, an intellectual, and a prolific writer. He authored more than a dozen books, and I may say here that I had the privilege to have read most of his books. He also contributed articles to various leading newspapers and journals, delivered lectures in various universities. This gave me an opportunity to peep in to his personality. My interactions with him as principal also provided me opportunities to understand him. Dr. Zakaria was a nationalist and a secularist to the core. As a student activist, he rubbed shoulders with the great nationalist leaders such as Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, K.M. Munshi, Maulana Azad, and so on and so forth. Dr. Zakaria was the architect of modern Aurangabad. During his ministership of 15 years, he worked tirelessly for the progress and development of Aurangabad. And soon Aurangabad became one of the fastest cities in Asia. He encouraged industrialists from Mumbai and Pune to set up their units in Aurangabad in the areas like Chikkathana and so on. No progress is possible without the availability of ample water. Dr. Zakaria was instrumental in getting water from Jaikwadi Dam for the city. And ever since, Aurangabad never looked back and became one of the premier cities in the state of Maharashtra. Dr. Rafiq Zakaria was an educationist, and he changed the educational map of Marathwada, and for that purpose, that of Aurangabad. He established
Maulana Azad Education Society, of which he was the founder president. He built a number of educational institutions that made Aurangabad a premier educational center. Dr. Zakaria was a hard taskmaster. He had a very sharp eye on the minute details and would not tolerate any laxity. The integrity, incorruptibility, hard work, clearness of head, of which he was a very embodiment. He demanded the same from the persons who worked under him and drove them to achieve excellence in their work. Here, I may also submit very humbly that Dr. Zakaria had a royal temper, but I must also admit that when he realized that he had unwittingly hurt the person, he went an extra mile to cajole and pamper him. It was an Herculean task for me to encompass such a multifaceted personality in such a short space. However, I have attempted to shed light on some of the aspects of his great personality. I also believe that Dr. Zakaria is an underrated figure in the history of modern India. He deserved a lot more than he is given credit for. Maybe history will do justice someday to this great man. Thank you. राना हैदरी बनने का सफ़र मैंने मौलाना आज़ाद कॉलेज में किया। चूँकि मेरा तफर्रुग डॉक्टर साहब ने मेरी पहचान बनाने में मदद की। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया का नाम औरंगाबाद से इस तरह जुड़ा रहेगा जैसे अदबी दुनिया में रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम और अलीगढ़ एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। बहुत इदारों की सरपरस्ती के साथ डॉक्टर ज़करिया ने एक तो औरंगाबाद की तज़ीरकारी का काम किया, दूसरे वो एक मुफक्किर, मुसन्निफ, मुदब्बिर, दानिश्वर, माहिर तालीम भी थे। सियासत के साथ साथ उन्होंने तालीमी मामलात में भी अपने आला व अरफा सोच और फ़िक्र रखने वाले इंसान होने का सबूत दिया। उनकी किताबें इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। उनके बेशुमार कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा उनकी किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान है, जो शैतानी आयत का मुकम्मल जवाब है, जो दलीलों के साथ दिया गया है, जिसके ज़रिए से इस्लाम की सही तस्वीर सामने आती है, जिसका एतराफ़ कई उलमा और दानिश्वरों ने किया है। इससे उनकी आलिमाना फ़िक्र और मज़हब इस्लाम से बेपनाह लगाव का पता चलता है, और ये भी कि वो एक दर्दमंद दिल के मालिक थे। स्कॉलर होने के सबब वो मुसलमानों के उरूज ज़वाल पर भी नज़र रखे हुए थे। जैसे सर सैयद ने तालीम के सिलसिले में लड़कों की तालीम के साथ साथ लड़कियों की तालीम पर न सिर्फ जोर दिया बल्कि मुखालिफतें भी बर्दाश्त की। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने भी मौलाना आज़ाद लेडीज़ कॉलेज कायम किया। इसके लिए बेहतरीन इमारत का भी इंतज़ाम हुआ और यूँ अल्लाह ने उन्हें एक बड़ा काम उनके ज़िम्मे किया, और आज की तालिबात उनका ये एहसान इसी तरह याद रखिए जैसे सर सैयद का एहसान याद रखा गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि लड़कियों ने तालीमी मैदान में अपनी जहानत और फतानत का सबूत दिया और ज़िंदगी के बड़े मारे के सर किए। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर साहब मौजूदा दौर के तकाज़ों को भी पेश नज़र रखे हुए थे। होटल मैनेजमेंट इसकी बेहतरीन मिसाल है। उनके चुने हुए प्रिंसिपल, प्रोफेसर, लेक्चरर्स भी इसका सबूत हैं कि वो सिर्फ एक लीडर ही नहीं थे, तालीमी निकात पर भी उनकी गहरी नज़र थी। अदबी मामलात में भी वो पूरी तरह फिक्री और ऊंचाइयों पर थे। इसके लिए ये शेर इन पर पूरी तरह सादिक आता है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। यकीनन वो इस शेर के मिज़दाक़ आला ज़र्फ़ और आला सलाहियतों के मालिक थे।
अभी औरंगाबाद और मजमूई तौर पर मुसलमानों को अपने ऐसे रहबर की ज़रूरत थी जो उन्हें अब ऐसे कड़े वक्त में उनका सहारा बन सके। काश मौत ने इतनी जल्दी न की होती तो ये खुश मिजाज, जोश, खुशखुल्क और मर्द मोमिन की मिसाल बनने वाला शख्स हमसे जुदा न होता और हम गाहे गाहे ज़करिया साहब के मुंह से ये शेर सुनते रहते हैं। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं जिसे उन्होंने अपने कॉलेज में ऐसी जगह दी कि अपने एहसासात और जज्बात का बयान भी कर सकूं, गोया डॉक्टर साहब ने अपने इदारे में जगह देकर अपनी पहचान बनाने और आगे बढ़ने का भी मौका दिया है। मेरे ससुर याकूब उस्मानी, जिनसे डॉक्टर साहब और मैडम कई दफ़ा मिलने भी आए, कॉलेज के स्टेज पर भी उनको मदऊ किया, वो उनको कभी फरामोश न कर सके और हमेशा उनको बहुत मोहब्बत और अदब के साथ, या यूँ कहिए कि बड़े अखलाक वाले इंसान की बहैसियत को याद करते रहे।